Okay, okay, okay. हाँ. That you need to do, huh? We can put your name now, na? Okay. चलो, we start. ठीक है, चलो, pay attention. सबसे पहले good morning. In OPM, we have done 2 chapters. The first chapter, what we did was the most easiest, but it was the most asked chapter, and which was that? It was assignment. Okay. We did solve a variety of questions. We also solved the past examination question. But एक तो चीज समझ में आया कि भाई वो लोग कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे, वो एक ही ट्रेंड पूछ रहे. If I ask something about assignment, 2-3 points, because see, having said the assignment, we also have MCQs also. So we have 30-70. Okay. So if I talk about assignment, which method we use for assignment? It is Hungarian. Okay. It will be, visibility will be this. Hungarian method. Also, one more thing in assignment, there is 1-to-1 allocation. So at the end of the day, you'll have only once allocation. Okay. This is one thing. Second, in assignment, if you recollect something, if you want to revise in 2-3 minutes, tell me the entire stuff in assignment. Number 1, steps उसके क्या थे? सबसे पहले you have to see the problem is for what? Minimization or not. How to check whether it is for minimization? It has to be for time or cost. Okay, we have to minimize both the things. ये एक हो गया. Second step, balance है क्या नहीं? How do you check whether balance is not there? Like, हाँ, number of rows with number of columns. Right? Any rows into columns. Okay, if there is not balance, row or column नहीं है, तो आपको dummy add करना पड़ता है as per the circumstance. Row या column. In dummy you will add out what? Zeros. After that, it is that row operation or row minimization. Okay, pick up the select lowest one and then subtract it. Okay, if there's 0 already, then don't do it. Just copy paste it. Column minimization, same thing we do. After that, we shift to what? Your optimality test. What is that? You have to draw the lines. So what is the rule? You have to cover all the zeros in the minimum possible. ऐसा नहीं है कि जीरो दिखा कि उसको लाइन नहीं, आपको सोच समझ के मानना पड़ेगा. जहाँ पे 2-3 जीरो कट हो रही है एक ही लाइन से, go and do that only first. Okay. The main point in your examination is that only. If at all, what? If at all there is no optimality. If the solution is not optimal, how will you check whether it is not optimal? If the number of lines is not equal to order of matrix, then it is not optimal. Then what do you do? That is the most important step. You will select the most smallest element of the uncovered element, add it to the intersection, subtract it from the uncovered. जो covered है भाई आपको वैसे रखना है. You have to do the same sequence again and again till your this is there. What? Optimality. Okay. After that, I think it's very simple. You just draw the box allocation करना है. You start with that 0 where there is only 1 in that line of column. Okay. सबसे वही select होगा. अगर नहीं होता, you might have one more solution to it. Okay. Then show him the both. We had solved one question in the past examination where these guys have showed both. आपने वो वही करनी है, ठीक है? And आंसर सेम आएगा, सिर्फ allocation क्या होगा आपका चेंज होगा, ठीक है? I don't think they will ask you more. So assignment में 7 मार्क के आपको वही पूछेंगे, क्या पूछेंगे? That whether it is optimal or not, as far as I am concerned. Second, उसमें और वैरायटी आ सकते हैं if the question is for maximization. अगर तो आपको first आप क्या करते हैं उसमें? You select the biggest number, subtract it from everywhere, ठीक है? Simple. ये एक हो गया. Now tell me more. ये हो गया assignment. Then we shift the focus to where? We shift your focus to what? CPM port. ठीक है? What is CPM? Critical path method. ठीक है? इसमें 2-3 varieties की है. सबसे पहले 3 क्वेश्चन कंफर्म थे उनके. First, draw the network diagram. That was simple. Second, हाँ, total float निकालो. और you have to select the most critical path. So if they are asking you total float, then only I will do forward back. But eventually they will ask you only because 7 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है? तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे, which I think एक्टिविटीज बहुत कम रहेंगे एग्जाम में, ज्यादा रहेंगे. आपने ज्यादा वाली की, वो बड़े वाले की, वो छोटा डायग्राम एक्टिव वो ड्रॉ किया आपने.
make sure all the arrows are forward touching the event. Then you do the forward competition, the backward. उसके बाद you will do the net paths आप ये करेंगे draw all the paths from the start event to the end event. उसके बाद जो longest वाला है that is your answer of CPM. Okay, when I talk about the columns, all the columns, it starts with activity, your duration, EST, EFT, LST, LFT, total float, slack of head event, slack of tail event, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है, उतना ही है उसमें, ऐसा कुछ नहीं. जो लास्ट लेक्चर्स में अपन ने किए थे वो एक और एक किया था वैरायटी जहां पे आपको प्रीसीडिंग एक्टिविटी देंगे वो, इफ एट ऑल, जो अपन ड्रॉ कर रहे थे. ओके, इफ एट ऑल दे आस्क यू सो यू नो व्हाट टू डू. उसमें आपको एक्टिविटी नहीं रहेगा, उसमें इवेंट रहेगा, इसके बीच है, इसके बीच जहां पे डैश है वो आपको स्टार्टिंग वाला इवेंट है. एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ ये 7 मार्क है, ये 7 मार्क है, और हम जो कर रहे हैं वो भी क्या है, 7 मार्क की है. ठीक है, सो प्लीज take a new page and write down transportation. Please take a new page and write down transportation. Please take a new page and write down transportation. ठीक है. Now there was a reason I did not mix up chapters of assignment and transportation. ठीक है, because एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, असाइनमेंट ही सॉल्व कर रहे हो, बट थोड़ा सा अलग है. सबसे पहले असाइनमेंट में अपना मेथड फिक्स था हंगेरियन, इसमें वो मेथड नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़े दिमाग में एक चीज डालता हूं आपके, इट इज वन टू मेनी एलोकेशन. इट इज नॉट वन टू वन. इट इज नॉट वन टू वन. लवकर सांगितलं वेयर इट इज. Online people, 1 minute. What? This is connected, no? Yeah. Done? Okay. So, in transportation, it is one to many. What do you mean by this one to many? इसका मतलब ये होगा, अगर जब मैं लास्ट में कुछ ड्रॉ करूंगा तो शेड्यूल रहेगा. असाइनमेंट में वन एलिमेंट कैन केटर टू अ लॉट ऑफ स्टफ. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टॉक अबाउट फैक्ट्री एंड वेयर हाउसेस, क्या बोला मैंने, फैक्ट्री एंड वेयर हाउसेस. सो और हाउ मेनी ट्रक्स आर देयर, हाउ मेनी लोड इज गोइंग टू लॉट ऑफ फैक्ट्रीज. सो वन ट्रक कैन गो टू लॉट ऑफ फैक्ट्रीज. ये ट्रक यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ऑल दैट. सो देयर कैन बी वन टू वर्क मेनी. दिस इज, ये पहला वाला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, if I talk about what now, methods. Okay, भाई साहब इसमें 3 मेथड है. There are 3 methods in a curriculum. Number one, northwest corner method. Northwest corner method, also called as NWCM. Northwest corner method. Northwest corner method. Second, least cost method. Least cost method. And the most important वाला point जो अपन सॉल्व करेंगे, and that is VAM, Vogel's approximation method. Vogel's approximation method, also called as VAM. Also called as VAM. Also called as VAM. ये हो गया. The most asked will be this method. Which one? Okay, सब करना है आपको. एक बार आपको इसके ऊपर हैंड्स ऑन हो गया ना, ये आपको बहुत ही इजी लगेगा. मतलब पहले वाले में कुछ है ही नहीं, बट अभी आपको मैं बोल नहीं सकता, वो बाउंस हो जाएगा पूरा. तो उससे अच्छा वी स्टार्ट विद व्हाट, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड. एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, वो क्वेश्चन से आपको अंदाजा आ जाएगा. एक क्वेश्चन को टाइम लगने वाला है,
तो यही क्वेश्चन इन एंड आउट करो, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली एंड देन वी विल गो अहेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 समजून करा बघा काय लिहिले. A company has 3 factories. A company has 3 factories: F1, F2, F3, which supply to warehouses W1, W2, W3. Unit shipping costs are as under. Unit shipping costs are as under. मतलब आपको जो नीचे दिया वो क्या दिया अभी? शिपिंग कॉस्ट. शिपिंग का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया. From one place to another place. For one place to another place. देखा आपने? Warehouses and factory. Warehouses and factory. Okay? Warehouses. W1, W2, W3. Factory F1, F2, F3. F1, F2 and F3. ठीक है, यहां पे रहेगा आपका सप्लाई और यहां पे आपका रहेगा डिमांड. ध्यान देंगे प्लीज. दिस विल बी इन यूनिट्स एंड दिस विल बी इन यूनिट्स. अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन, आपका काम यहां भी खत्म हो जाएगा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का. अब ये चीज दिमाग में डालनी है आपके. पहले मैं नंबर्स लिखता हूं पे. 16, 14, 26, 28, 4, my bad, 24, 12, 18, 16. 12, 18, 16. Okay? See, now the point is, factory are supposed to supply. Warehouses के demand होते हैं. तो मैं units लिख रहा हूं यहां पे 200, 160 and 90. इतना वो सप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं. डिमांड 180, 120 and 150. जानबूझ के क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, समझो इसको. The numbers which are in between, those are all rupees. So for example, if I want to explain you this, it's very simple. So भाई साहब, F1 से यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 16 पर यूनिट है. दैट इज द मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैट्रिक्स. ये हो गया एक. F1 सप्लाई कितना कर सकता है? 200. उतना ही है, उसके ऊपर है नहीं, वो कर ही नहीं सकता भाई. अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो वो एग्जॉस्ट हो गया. वो अगर एग्जॉस्ट हो गया तो वो एग्जॉस्ट हो गया. बसा ही बसा. वेयर हाउस का डिमांड कितना है? इसका मतलब क्या, मुझे बताओ. नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास अगर सप्लाई भी ज्यादा रहेगा तो डिमांड के ऊपर थोड़ी कुछ कर सकते हो. उसका डिमांड ही 180 है. ये समझ में आ रहा है क्या? So this is the question. Now please write down. Determine the optimal distribution. Determine the optimal distribution. Determine the optimal distribution to minimize shipping cost or your transportation cost. Shipping cost or transportation cost. Simple. ठीक है, लक्ष्य रख सकें क्लियर. आई होप दिस इज गॉन इन योर हेड. ये क्वेश्चन में समझ में आया कि भाई आंसर तो बाद में लिखेंगे अपन, विल डू इट आफ्टरवर्ड्स. बट इफ दिस इज गॉन इन योर हेड, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है. सो देयर कैन बी वन टू मेनी एलोकेशन. ये सबसे पहला है. इसमें 3 मेथड आते हैं. तीनों मेथड में आपके सामने लिखे हैं. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो वैम. वैम विल बी द मोस्ट आस्क्ड. आपने को जो 2-3 दिन करना है वो वैम के ऊपर ही करना है. ठीक है, इफ यू हैव हैंड्स ऑन वैम, द रेस्ट इज इजी. दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन यू. फैक्ट्रीज आर गोइंग टू सप्लाई, वेयर हाउसेस के डिमांड होंगे,
फैक्ट्री सप्लाई के ऊपर कुछ कर नहीं सकता, जितना 200 का सप्लाई उतना ही कर सकता है, क्या बोलो नहीं सकता जगह, और वेयर हाउस पे जितना डिमांड है उसको उतना ही देंगे भाई, ज्यादा क्यों देंगे उसको, ठीक है। अंडरस्टूड दिस, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन, डायरेक्टली सॉल्यूशन लीड टू, ठीक है। आंसर आंसर step number 1, for a moment please delete all the assignment you're thinking from your head, okay, fresh transportation, you are confused. The first step is whether you have to see whether it is for minimization or not. Is this minimization problem? Yes sir, because अभी क्या दिया उन लोगों ने, आपने को कॉस्ट कम करना है, so please write down step number 1, as the above data represents shipping cost per unit from various factories to warehouses, therefore problem is for minimization. Simple, ठीक है। स्टेप नंबर 2, व्हाट रहेगा मुझे बताओ स्टेप नंबर 2 में? बैलेंस अगेन है, वेरी गुड, ओके, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, ऑनलाइन ऑफलाइन, हाउ टू चेक वेदर दिस इज बैलेंस्ड और व्हाट? नो नो नो, दिस नॉट, तो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना फिर पूरा। सो इन ट्रांसपोर्टेशन इफ यू हैव टू चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और व्हाट, यू हैव टू चेक द total of demand is equal to total of supply. Total of demand is equal to total of supply. Total of demand is equal to total of supply. पाटील लवकर कर, टोटल मास सप्लाई किती आहे बघ, सप्लाई टोटल माल किती आहे हे बघ, सप्लाई टोटल कितना आ रहा है 450 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बैलेंस्ड है। तो यू विल टेल मी इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड, तो ऑब्वियसली यू विल ऐड व्हाट, डमी रो डमी कॉल, ओके। सो प्लीज राइट डाउन as total demand जो कितना है 450 is equal to total supply कितना है ये 450, therefore problem is balanced. Step number 3. Now you have to please pay attention. Online people, I request you to please pay attention. नहीं तो कुछ समझेगा नहीं भाई, कुछ नहीं समझे. Okay, everybody please online offline. मैं तो बोलता 2 मिनट के लिए पेन ही छोड़ दो. Okay, just see and then you try to do it. Okay, so it is not as same as Hungarian. भाई हम लोग ठीक है, first है वो same है क्या? Minimization. Second is also same, but the only thing is the solving is a bit different. But the third one is completely different. Okay, pay attention. Initial solution by BAM. Okay. I do one thing. Do it with me only. First, do it with me. Initial solution by BAM. नहीं तो पूरा बाद में bouncer हो जाएगा पूरा. समझिए नहीं क्या चाह रहे हो. Online people, everybody is ready now. Please pay attention, all of you. Initial solution by BAM. Just copy down the matrix, please. Enter F1, F2 के साथ सब कुछ copy down करो proper. F1, F2, F3, W1, W2, W3 और यहाँ पे था आपका सप्लाई जो यूनिट्स में है और ये आपका डिमांड है, ये भी यूनिट्स में, ठीक है। We had 16, 14, 26, then we had 20, 8 and 24 and we have 12, 18 and 16. यहाँ पे था 200, 160 and 90 और यहाँ पे 180, 120 और 150. Everybody please pay attention. Okay, now is the important task. Okay, now after this there's something called as, we have to compute two things, row penalty and column penalty. क्या बोला मैंने?
रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी, यू हैव टू डू दैट फर्स्ट. सो हाउ डू दैट? रो एज यू नो, रो इज अ हॉरिजॉन्टल थिंग. ओके, तो मुझे यही बताएंगे सबसे पहले. इफ आई जस्ट स्टिक टू रो, रो में वो मत चेक करो, यूनिट्स वाला बाद में, यूनिट्स को आपको काउंट करना नहीं है. सिर्फ फर्स्ट 3 नंबर रो का कौन सा है? 16, 20 और 12. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 12. 12 से ऊपर नंबर कौन सा है? उसके जस्ट ऊपर. इट इज 16. डिफरेंस कितना आएगा दोनों का? ये होगा रो पेनल्टी. टेल मी रो पेनल्टी ऑफ सेकंड रो. लहान नंबर कुठला आहे? 8. 8 च्या थोडासा वर कुठला आहे? 14. किती आलं? 6. थर्ड वाला आप बताएंगे. 60, 20, वो कितना आएगा? ये हो गया रो पेनल्टी. सेम थिंग यू हैव टू फॉलो फॉर व्हाट? कॉलम. बताएंगे. 2, 12. 12 and 16, how much? 4. Everybody okay with this? Do it. Like write it in a book. Online people, did you get this? Yes, no? Row penalty, column penalty. Select one number. Please don't consider units in that. किया आपने? Can I go ahead? Now, 4, 6, 8, 2, 12 or 4. Everybody done? Last. ऑनलाइन पेपर आपका हो गया क्या? कंफर्म करेंगे एक बार प्लीज. Now you have to pick up the most highest penalty. कौन सा है वो? एक मिनट कुछ करो मत. Which is the highest number? So I think this ये 12 दिख रहा है हमको. अभी I want everybody of you to please concentrate only on 12. यहाँ पे देखो 12. आपकी बुक में देखो, टीवी पे देखो, कहाँ पे भी देखो. 12 अगर आप फ्रीज करते हो, इसका मतलब वो कॉलम फ्रीज हो गया ऊपर वाला आपके दिमाग में. बाकी कुछ मत देखो अभी. You have to only concentrate on 28 and 24. Which was smallest number out of that? 8 को I have to allocate a quantity. I use the word quantity. कसं करायचं होतं बघा. Tell me one thing. उसके दो एक्सट्रीम कॉर्नर देखो 8 के. एक 160 दिखेगा यहाँ पे, उसके नीचे कितना दिखेगा? 120. ओके, how much I allocate over there? Whichever is less. Whichever is less. विचार करा ना, वो जो F2 है ना, so F2 और W2 का वहां पे बराबर इंटरसेक्शन आया है 8 के ऊपर. भाई साहब वहां पे 160 है, मतलब F2 जो है वो 160 सप्लाई कर सकता है. बट द वेयरहाउस 2 का रिक्वायरमेंट कितना है? 120 है. हाउ विल आई गिव मोर देन 120 टू हिम? दैट इज आई सेड व्हिचएवर इज लेस. सुनो सुनो सुनो, आप जब 120 देते हैं तो भाई साहब ये एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया. 120 इज गॉन ना. 120 इज गॉन नाउ, फिनिश. द मोमेंट यू स्ट्राइक ऑफ समथिंग, इट माइट बी अ कॉलम और इट माइट बी अ, उसका बराबर ऑपोजिट पेनल्टी निकालने. So I strike off what now? Column. म्हणजे नंबर पडेल तर काय काय लागणार आहे? रो पेनल्टी परत. देखो रो पेनल्टी कितना आएगा बताओ मुझे. अभी पहले वाले दो में 2 ही नंबर बाकी है, 12 और 16. कितना आएगा यहाँ पे? 4. सेकंड में 18 और 14 कितना आता है? 4. नेक्स्ट थर्ड में 10. डोंट डू फॉर नीचे. नाउ टेल मी द न्यू नंबर विच यू कंप्यूटेड 4, 4 and 10. नीचे कितना बाकी है? हाईएस्ट कौन सा है? 10. इसका मतलब वो रो फिक्स हो गया अभी. 10 में और दिमाग में रो 26 और 16 है. स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 16. 16 को आपको क्वांटिटी एलोकेट करना है. 16 को क्वांटिटी एलोकेट करना है. 90 और 150. तो मैं क्या करेगा यहाँ पे? 90. नाउ व्हाट विल गेट स्ट्राइक्ड ऑफ? ये गया. इफ आई डू रो, अपोजिट क्या है? अपोजिट कॉलम. तो मुझे कॉलम वापस क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी. कर सकते हैं कि हाँ से कर सकते. 2 नंबर अभी भी है. 2. यहाँ पे कितना आएगा? विच इज द हाईएस्ट? वहां पे 4, 4, यहाँ पे 2 और 6. 6 आ गया. अभी 6 का कॉलम दिमाग में रखो. 12 और 18 है बराबर. 12 और 18 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 12 को क्वांटिटी एलोकेट करना है. नंबर दो मुझे, 200 या 150. आंसर क्या आपका? बिल्कुल गलत. वापस सोचो.
वापस सोचो. अरे एवरीवन, योर आंसर इज राइट 150, बट 150 में से भाई 90 ऑलरेडी खत्म हो गया ऊपर. 150 में से 90 गए ऊपर ऑलरेडी. आउट ऑफ 150 इज माय डिमांड, बट 90 इज ऑलरेडी गॉन नो. सो एक्चुअल में कितना बाकी है नीचे? सो इट इज 60 or 200, whichever is less. 60. And now this will go 60, 90, 150. अगर कॉलम मारा मैंने, वापस क्या निकालूंगा मैं? निकाल सकता है क्या? नहीं, बिकॉज दो निकालेंगे नंबर, दो नंबर है 16 और 16 ही बाकी ऊपर. तो इसका मतलब मुझे रैंडमली अभी देना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट लीव एनी नंबर्स ब्लैंक, बॉक्स डालना पड़ेगा. तो 1640 में सबसे ऑब्वियसली आई गो विद स्मॉलेस्ट नंबर ओनली. सो आई गो हियर विद व्हाट? 40. प्लीज टेल मी व्हिच नंबर आई शुड गिव. यू टेल मी. You tell me. So you will tell me, sir, 160, 180, answer 160. 160 में से 120 ऑलरेडी गया है. कितना बाकी है ऊपर? 40. और 16 को कितना दूं? 16 को कितना दूं? So out of 200, 60 is gone. ऊपर कितना बाकी है? 140 बाकी है. नीचे कितना बाकी है? 140 ही बाकी होना चाहिए, तब जाके मैच होगा पूरा. ये 140 आना चाहिए, ठीक है? मतलब वो मैच ही होना चाहिए पूरा टोटल. Did you get this or what? अभी खुद ट्राई करो. डोंट कॉपी पेस्ट व्हाट आई हैव रिटन. यू ट्राई इट ऑन योर ओन. ट्राई इट ऑन योर ओन. समझ में नहीं आया मुझे वापस बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं. आई एक्सप्लेन यू अगेन. सबका हो गया? मुझे बताओ, हो गया ये? समझ में आ रहा है ये? जस्ट लेट मी नो वेदर यू आर लाइक डन, देन आई गो अहेड. बिकॉज अपने को अभी तक जैसे अपन वो ऑप्टिमलिटी करते पता है क्या, वीडियो ऑप्टिमल है क्या नहीं है, तो ये वैसा ही है. चेक करना पड़ेगा कि आगे जाने से पहले ये फीजिबल है क्या नहीं, चेक करना पड़ेगा. चेक करते हैं अपन. आई टेल यू. सो झाले का सांगा. सगळ्यांचं झाले का ऑनलाइन ऑफलाइन? इफ डन आई कैन गो अहेड. Before going on to step number 4, we have to check ये सोल्यूशन निकाला है, ये feasible है क्या नहीं. मतलब
टू गो ऑन टू स्टेप 4 और नॉट, तो तुम्ही जाऊ शकता का नाही स्टेप 4 में. तो कैसे चेक करने का भाई है? नंबर ऑफ बेसिक सेल्स is equal to m plus n minus 1. Now remember one thing, one second, don't write, one second, understand first. I'll give you time for writing, don't worry. When I talk about basic cells in simple language, जो डब्बा निकला ना, डब्बा जो स्क्वायर्स है ना, those are called basic cells. कितने सांगा मला? 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिखा यहाँ पे. Is equal to m plus n minus 1. M stands for row, n stands for column. कितने रो है? 3. कॉलम कितने हैं? 3. So 3 plus 3 minus 1, this will be what? If this is not, then that's a different question then. अगर ये क्या नहीं होता है, मैच नहीं होता है, तो it will be different variety. Okay. Then you can write the solution is feasible. You can go ahead. Solution is feasible. हाँ, this is row, this is column. Always remember that. M is row, N is column. लक्षात ठेवा हे शेवटपर्यंत. Online people, everybody is doing. Please give me a confirmation. Everyone, I want everyone's confirmation, please. I want everybody's confirmation. Yes or no. सबका हो गया यहाँ पे? Everybody done? Done. Now, can I go on to step number 4? Step number 4. Technically, this is the optimality का test in transportation. What am I doing right now? अभी जो मैं कर रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स विद द बॉक्स. सिर्फ आपका जो सप्लाई और डिमांड है वो नहीं लिखा तो चलेगा. सिर्फ मुझे क्या चाहिए, बाकी वो सब लिखो. F1, F2, F3, W1, W2, W3, 16, 14 and 26, 28, 24, 12, 18, 16. ठीक है. अभी where was the डब्बा? 16 पे एक था, उसके बाद 14 पे भी था, 8 पे था, 12 पे था और 16 पे था. Right? Everyone okay with this? Now pay attention. Everyone pay attention. ये हो गया? Now this test is also called as optimality test, also called as U plus V test. सुनो मेरी बात सुनो. U plus V test. Okay. So why U plus V? I'll tell you why. You know when we should do forward backward computation? In forward computation, it always used to start with 0. याद है क्या? यहाँ पे U1, U2 और U3 लक्षण वाला यही एक स्टेप है जो आपका दिमाग खाएगा. This always starts with 0. This always starts with 0. You know what I feel? I should do it, and then you guys should do it. लक्षण 2 months. समझेंगे? मैं वापस बोले एक क्वेश्चन अगर आपने इनसाइड आउटसाइड किया ना, I can give you any question on transportation. माझ्या ऑफिस मध्ये आरामात ऑफिस मध्ये खुर्ची आहे ना, त्या बाजूला हेल लावलाय. प्लीज थँक्यू. सो इसके लिए क्या करना होता है सुनो. I'll write down a condition over here. For all the basic cells, U plus V is equal to cost. बेसिक मतलब क्या है? डब्बा. तो we need to do this now. Okay. ये लिखो पहले. This is the first condition. This is the first condition. What you need to do? U plus V is equal to cost. U plus V is equal to cost. Thank you.
Yeah. That's V. Sorry. तुम वगैरह का क्या है वो? और U बाजू में है ना? See ना, it's a bit healthy. V is on diet mode. Pay attention. That's U and this is V. Yeah. Okay. ये हो गया अभी ध्यान दो. So what is the condition was? U plus V is equal to cost. Cost is basically वो number जो है नीचे. We need to carry out this procedure, this step only for what? Basic cell. Okay. Now I'll tell you one thing. Let me start first. U1 is obviously 0. Now I need to fill up all the spaces. U2 fill up करना है, U3 fill up करना है, V1, V2, V3 सब fill up करना है. You tell me one thing. Please concentrate on V1. Please concentrate on what? V1 यहाँ पे. ठीक है, ये V1 है. अगर V1 मुझे वो जगह भरना है V1 का, तो वो दो कौन से आएंगे उसके ऊपर? उस सबसे पहले काम 16 को चेक कर रहे हैं आप 16 को. अगर मैं 16 नंबर पे, क्योंकि आपने को ये एक्टिविटी करना है सिर्फ बेसिक सेल के लिए. बेसिक सेल 16 बेसिक सेल है क्या? हाँ सर है. 16 अगर मैं फ्रीज करता हूं तो उसके दो इंटरसेक्शन कौन से? U1 और V1 दोनों कॉर्नर. बराबर. सो U1 में ऑलरेडी नंबर है आप मेरा, तो 0 प्लस व्हाट इज 16. यहां पे क्या डालू मैं? 16 हो गया. वही तो करना है ना मुझे. क्या करना है यहाँ पे? U प्लस V इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट. आई कर लो वाला. ये समझा? अभी और एक बात, अभी U2 के ऊपर ध्यान दो. U2 अगर U2 को पकड़ता हूं मैं, तो उस U2 में दो बेसिक सेल है, एक 14 और एक 8 है. 8 तो पकड़ नहीं सकता बिकॉज 8 के नीचे नंबर भी नहीं है कुछ. मैंने पकड़ा 14 को. अगर मैं 14 को पकड़ता हूं तो दो इंटरसेक्शन कौन से? U2 और V1. बराबर. Now you tell me one thing. U plus V is equal to cost. 16 plus minus what is 14? Minus 2. I can't do plus 2 no. ये minus 2 है ना भाई. For 16 minus 2 will be what? 14. ये समझा गया. Now next try करेंगे. V2 को पकड़ो. अगर मैं V2 को पकड़ता हूं, 8 नंबर का बेसिक सेल है ऊपर. 8 के दो इंटरसेक्शन कौन से? U2 और V2. बराबर है. -2 ऑलरेडी वहां पे. यहां पे क्या डालो मुझे नंबर 8 मिलेगा. वेरी गुड. अब किसे सोच रहे हो तुम लोग? 10 - 2 विल बी 8. सिंपल. लास्ट नंबर आपको अभी डिसाइड करना है. लास्ट नंबर आपको डिसाइड करना है कौन सा है. सो इट इज U3 और V3. मतलब मेन पॉइंट इज व्हाट? बोथ दोनों के नंबर नहीं है भाई. क्या हुआ? है ना? बताओ ना मुझे फिर. 0 प्लस व्हाट इज 12. दिस इज 12. सो V3 बहुत सिंपल था. अभी U3 सर 12 प्लस माइनस व्हाट इज 16. 12 plus minus what is 16? Plus 4. 12 plus 4 is 16. Did you understand this? This we have to carry only. ये दिमाग में डालो बस. इसको पूरा खेल है. ये आपके दिमाग में आना चाहिए. We need to carry out this activity only for what? Basic cell. Please do this. इसके आगे का स्टेप इंपॉर्टेंट है. Because optimal है क्या नहीं वो चेक कहाँ पे किया है. Whether we can go ahead with the next step or not. Have you done this or what? Pakka? Can I write the next step now? This is more important and this is last step. इसके बाद खत्म हो गया question. For all the no. It's that it's same वही चालू है. This only is going on because we have not given them green signal. No, in the previous step what we did the calculation, then we did this also na, and then we moved ahead. ये तो सिर्फ कैलकुलेशन किया है अभी. We have not shown them only. So now for all the non-basic cells, the condition corresponding U plus V minus cost must be less than or equal to what? 0. Now please pay attention. This is the most सबसे भारी स्टेप यही है भाई. ये आपके दिमाग में गया. ट्रांसपोर्ट चैप्टर खत्म हो. Transport chapter gets over. If you've understood till now what we are doing, I think this step is the most important step, which I feel. Okay? You do understand the first step. ये कंडीशन समझा क्या आपको? बेसिक सेल वाला.
अभी नंबर्स तो वी हैव पुट यार, नाउ व्हाट वी टू चेक ये भाई ऑप्टिमल है क्या नहीं, म्यूचुअल कंडीशन क्या है, कंडीशन में मंगा लो भाई। अभी ये अपने को करना है नॉन बेसिक के लिए, इसके लिए करना है पर नॉन बेसिक। नॉन बेसिक का मतलब है जिसके ऊपर क्या नहीं है, डब्बा नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में बोलो, जिसके ऊपर डब्बा नहीं है वो नॉन बेसिक है। प्लीज वेट, नो वेट वेट, लेट मी डू इट। एंड व्हाट इज द कंडीशन, u plus v minus cost, whatever the answer is, it has to be less than equal to what, मतलब भाई माइनस में आना चाहिए आंसर, जीरो तक चलेगा, पॉजिटिव नहीं चाहिए। नाउ यू हेल्प मी आउट इन दिस, यू टेल मी वन थिंग। तो एक एक को पकड़ेंगे पहले। पहले मैंने फर्स्ट रो में W2 पे पकड़ा, वो 20 नंबर का दिख रहा है वहां पे, वो नॉन बेसिक है ना। अभी नॉन बेसिक का इंटरसेक्शन क्या है मुझे बताओ, u1 और v2। सो व्हाट इज द कंडीशन, 0 प्लस 10 माइनस व्हाट 20, तो माइनस में आंसर आएगा क्या, अच्छा माइनस में आएगा ना, माइनस ही आएगा ना, खत्म कर, तो ये ओके, ये ओके। कम टू नेक्स्ट रो, नॉन बेसिक शो तक है, नॉन बेसिक 18, 18 का दो नंबर देखो क्या है, सो 12 और -2 है, हाउ इज 12 - 2, 10, 10 - 18 माइनस, माइनस में आएगा ना भाई, u प्लस v माइनस कॉस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, वो दोनों प्लस करो, इसमें से माइनस को, उसका आंसर माइनस में आना चाहिए। सो 18 का भी ऑल ओके। नेक्स्ट रो में आ जाओ, 26, दो नंबर कौन से है, 16 और 4, कितना आता है 20, 20 - 26 अगेन माइनस, ओके 24, 10 + 4 14 -24 माइनस, खत्म हो गया बात। सो वी कैन से दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो भाई वो एडवांस लेवल में जाएगी। लूप करके कंसेप्ट है, वो ड्रॉ करना पड़ता है, पर आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू इन दिस, कंसेप्ट है आपके इंटर में, बट आई थिंक दे विल आस्क यू मोर इनटू फाइनेंस, बट आई विल टीच यू, बट नॉट नाउ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन, क्या लिखेंगे कि this condition is getting satisfied and therefore solution is optimal, therefore solution is optimal, simple. Has everybody got it, yes or no? Has everybody got it, yes or no? आराम से हम खुद सांगतो एकच क्वेश्चन बोलते मैं करा ले जाओ। अब इसके बाद से और कितने स्टेप बाकी है, अभी इसके बाद आपको एक समझ में आएगा कि why am I saying one to many allocation, वो आपको अभी समझ में। This was step number what, 4. Now I'll go to step number 5, which will be what, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल। सिंपल, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल। क्या रहेंगे कॉलम्स भाई साहब, फैक्ट्री, वेयरहाउस, नेक्स्ट क्वांटिटी, लास्ट में आप डाल सकते शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो अब एक एक चीज करेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉक्स। सबसे पहले F1 को पकड़ता हूं। F1 किस किस को दे रहा है देखो मुझे, सर वो W1 और W3 को दे रहा है, तो फिर W1 लिखते हो यहाँ पे, W1 का क्वांटिटी कितना है, कितने वाला क्वांटिटी 140 है ना, पर यूनिट कॉस्ट कितना है उसका, पर यूनिट कॉस्ट, हाँ इंटू 140 कितना होता है, वन 140 इंटू कितना किया अपन ने 16, समझ में आ रहा है आपको। वापस F1 आ रहा है क्या पिक्चर में, हाँ सर वो F1 और एक को दे रहा है, वो किसको दे रहा है अभी, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टॉकिंग वन टू मेनी। असाइनमेंट में ये सीन नहीं था, असाइनमेंट में एक ही बार एक ही आता था, ये तो बरोबर दिया लगले 60, कितना आंसर आता है 720, प्लीज शो द कैलकुलेशन, और इफ यू डोंट माइंड यू कैन पुट वन मोर कॉलम आल्सो इफ यू वांट आफ्टरवर्ड्स। कौन सा रहेगा वो, पर यूनिट वाला कॉस्ट। फिर आपका आता है F2, फिर आपका आता है F2, F2 किसको दे रहा है, W1 कितना दे रहा है 40, 5 6 60, 560 कितना है 40 इंटू 14। F2 और किसको दे रहा है, W2 को दे रहा है, वो दे रहा है 120,
120 into A, 960, F3, W3, 90, 1440 and 90 into 16. कितना आंसर है? 5920. Is this your answer? Give me yes or no first. क्या अवघड है संघ ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ध्यान अगर यहाँ हुआ. This was an easy question. The point is if now see I'll tell you what happens. अपन ने वो रो मल्टी कॉलम मल्टी किया इस वाले क्वेश्चन में. So what we should do is to plus do row column mल्टी and then we should select no highest कौन सा है. दो हाईएस्ट है तो क्या करोगे? यहाँ पे भी हाईएस्ट है, यहाँ पे भी हाईएस्ट है. Then what you will do? Understood? क्वेश्चन कर लेगा मला. We'll see. We'll see. ये समझे आपको? क्वेश्चन नंबर 2. Online people done from and to 1, 2, 3. अब पट पट करना. A, B, C. Availability requirement ये यूनिट्स में और ये यूनिट्स में. ठीक है? 50, 90, 250, 4, 30, 45, 202, 220, 170, 50 and 2, 1, 3 and 4. Finish. 1, 3 and 4. ठीक है? Now tell me. Now टाइम लगा के सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन वी टुक 47 मिनट बाय द वे फॉर योर इंफॉर्मेशन. 47 मिनट्स हो गए. वही कर रहे. नाउ रैप इट अप फास्ट. आंसर स्टेप 1 क्या रहेगा? इज दिस मिनिमाइजेशन? यस. एज गिवन डेटा represents shipping cost, therefore problem is for minimization. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप 2 as total of availability कितना आ रहा है वो? 8 is equal to total of requirement, therefore problem is balanced. Done. Step number 3, initial solution by WAM. Initial solution by WAM. Cover on the matrix. 1, 2, 3, A, B and C. Availability, requirement 50, 90, 250. Next 30, 45, 200. Next 220, 170 and 50. अवेलेबिलिटी में कितना है? 1, 3, 4. यहाँ पे 4, 2, 2. शुरू करें सर. लक्ष्य दिया. सबसे पहले क्या करने का भाई? सबसे पहले क्या? फास्ट टाइम एवरीबॉडी विद मी. रो मल्टी कॉलम मल्टी. सिंपल. पहले निकालो. पहले वाला क्या है? 30 और 50 कितना आता है? 20. फास्ट है एवरीवन. 45 और 90 कितना आता है? 45. 50 and 200 150. नीचे 40, 15,
and 170 and 150 how much? 120. Which is the highest? 150 is the highest. The 150 highest है. पाटिल लवकर. Fast. The 150 highest है तो रो को पकड़ो पहले. तो 50 is the lowest number. उसको अपने को भी क्वांटिटी एलोकेट करना है 2 और 4. 2 which is less. समझा विषय? ये गया. 2 जाने के बाद रो करना पड़ेगा अभी. कॉलम गया ना तो रो करना पड़ेगा अभी. क्या? अरे भाई क्वांटिटी देखने गए. क्वांटिटी कहां पे एग्जॉस्ट हो रहा है? क्वांटिटी कहां पे एग्जॉस्ट हो रहा है? क्वांटिटी 2 नीचे खत्म हो गया ना, तो क्वांटिटी गया ना नीचे. What 150? So see what you did, you picked up 150. In 150 you picked up 50. 50 भी allocated quantity 2 और 4. तो 2 का एग्जॉस्ट हो गया ना भाई. अभी ये एग्जॉस्ट हो गया ना क्वांटिटी, तो कट नहीं करते फिर. ऐसा होता नहीं, कर होता ही है एवरी पॉइंट में. वो तो किया लास्ट क्वेश्चन में. नंबर्स थोड़ी करना है, क्वांटिटी एग्जॉस्ट करना है. नहीं करो, आई टेल यू. नेक्स्ट, इफ कॉलम इज गॉन, नाउ नेक्स्ट व्हाट विल डू? रो कितना है? 20. नेक्स्ट 45. नेक्स्ट 50. नॉट टेल मी व्हिच इज द हाईएस्ट. 50 हाईएस्ट है अभी. 50 को वापस क्या पकड़ा आपने? वापस रो पकड़ा. अभी रो में नंबर छोटा कौन सा है? 200. अभी 200 क्वांटिटी कितना है? कितना दो बताओ, कितना दो? सर 4 में से 2 तो ऑलरेडी गया है और नीचे 2 है, कितना 2 में? 2. ये समझा क्या? आप भी मुझे बताओ, आप क्या ये करोगे? कट. सो इट डजंट मैटर, कैन डू एनीथिंग. 2 ने तो क्वांटिटी गया. नाउ कैन आई डू रो अगेन? नो आई कैन नॉट डू. इसे रो एक ही नंबर है वहां पे, एक ही नंबर बाकी है ना, तो आई कैन गिव रैंडमली. नाउ गिव रैंडमली. 50 को दे दो पहले. कितना है 50 को? देखो 1 या 4. सर 1 ही जाएगा ना. 90 को कितना जाएगा? 3 या 4 में से ऑलरेडी एक गया है ऊपर, तो कितना है? और नीचे को कितना जाएगा? जाएगा 0. देना पड़ेगा नंबर. आई कैन नॉट कीप इट ब्लैंक, वो उसके ऊपर लाइन नहीं. लाइन इज नॉट देयर ऑन दैट. लाइन इज, आई कैन नॉट कीप इट ब्लैंक रे. लाइन नहीं है उसके ऊपर. कितना दिया उसको? 0. नंबर ऑफ बेसिक सेल्स इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1. कितने बेसिक? 5. कॉलम रो कितने? 3 प्लस 3 माइनस 1. ये हो गया. नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 क्या है? So we need to copy down the matrix U plus V test, optimality test. Copy it down. Numbers 50, 90, 250, 30, 45, 200, 220, 170 and 50. U1, U2, U3, V1, V2, V3. ऊपर कितना था? ABC था ना? So what is the first condition? अच्छा एक बार बेसिक ये डब्बे कहाँ पे? 50, 250, 200 और सबसे पहले 0 प्लस व्हाट इज 50? 50. समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट, which you tell me which number you want to compute. U2, U3, V2 what? U2 करना है अभी.
U2 के नंबर कौन सा है 90, 50 प्लस व्हाट इज 90 40। नेक्स्ट क्या करना है बताओ, कौन सा करना है वो बताओ, नंबर बताओ मुझे। U3 अगर करना है तो इट इज 250 वहां पे है कोने में, 50 प्लस व्हाट इज 250 200। नेक्स्ट, अभी तो दोनों इजी हो जाएगा बहुत, बताएंगे मुझे। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -150, बराबर है, फिनिश। नाउ फॉर ऑल द नॉन बेसिक सेल, फॉर ऑल द नॉन बेसिक सेल u plus v minus cost must be less than equal to 0। I'll do it, you just tell me computation। पहले रो में कौन सा 30 है, 30 के दो नंबर बताओ, 0 0 -30, इस बार -30 ओनली, खत्म, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट, सो -150 है, -120 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, वो भी नंबर माइनस में आएगा। नेक्स्ट 45, 40 प्लस 0 40, 40 माइनस 45 माइनस, उसके बाद -150 प्लस 40 कितना आता है माइनस, तो उसके बाद -170 भी माइनस होंगे, लास्ट में सब बेसिक ही, खुद छोड़ दो उसको। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, so that you have to write। So see, this is one thing। So for example, I tell you one thing, see, सबसे पहले मुझे एक इसका बताओ, अपन ने जो फर्स्ट किया 30 नंबर का बताओ, क्या था 30 नंबर का, 30 का बताओ, U1 प्लस V2 माइनस 30, हाँ कितना था इसका मुझे बताओ कैलकुलेशन। U1 कितना था, प्लस -30, कितना था -30, तो यू हैव टू शो दिस, हाँ तो बाद में करो, डू आफ्टरवर्ड्स, -30 लेस देन इक्वल टू 0, समझा क्या, that you leave some space, transportation schedule from to quantity cost, from to quantity cost 1A टू, इनको वापस बने क्या, नहीं, 2A, 3 किसको दे रहा है A, 3 सबको दे रहा है एक्चुअली, B C, कितना आ रहा है, यस डन, स्टॉप हियर, होमवर्क कर दो क्या,
Second question will be solved very soon, less than 10 minutes.